So a very good morning to all of you. As you all know that we are continuing with the grammar topic, that is tenses, and previously we have done present tense and its types, past tense and its types. So today we are going to do future tense and its types. So the first type is simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense, right? So we'll discuss all the types one by one. So first, coming on to future indefinite or simple future tense. Many a times I already told you that both are one and the same thing. Either we can call it future indefinite or we can call it simple future tense, right? So जो दोनों नाम है वो एक ही tense के हैं. Don't be confused. So what is simple future tense and where is it used? So simple future tense is used for an action which begins at a certain future moment. The action has not been done right now. It was not done in the past, but it will happen in the future time. It is going to happen. It has not happened yet. So it will begin at a certain future moment. For example, he will come here on Sunday. वो यहाँ Sunday आएगा. I shall meet you tomorrow. मैं तुम्हें कल मिलूंगा. They will write a letter to me. वो मुझे एक चिट्ठी लिखेंगे. So did you notice that I spoke the words ga, ge and gi? So the sentences, Hindi sentences ending with ga, ge, gi, for this type of sentences, we use simple future or future indefinite tense. Now let's just see the rules of this tense. First, affirmative sentences, the rule is subject plus will or shall plus first form of verb and plus object. Very simple rule. I hope everyone is clear with it. But here one thing that is to be taken care of is that shall is used with the first person. First person means the pronouns like I and we are included in first person. So with I or we have to use shall. Otherwise, it is grammatically incorrect. Mostly the students use will with I or we. That is not correct grammatically. Otherwise, in informal language, we use will with I. जब हम बोलते हैं तब हम कह देते हैं I'll go to the market, I will watch the movie. But during writing, when it comes to writing, you have to take care of the grammatical rules. So it is always shall. So see the examples. He will play football. वो football खेलेगा. It will rain heavily in August. August में भारी बारिश होगी. We shall go to market in the evening. हम शाम को market जाएंगे. गागेगी, जो अभी एक्शन अभी हुआ नहीं बट होगा, आने वाले टाइम में होगा. फॉर दैट वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, very simple rule. You will just simply put not with helping verb. Rest of the rule is same. Subject plus will not or shall not plus V1 plus object. So examples, he will not play football. It will not rain heavily in August. We shall not go to market in the evening. ठीक है? Now you are to take care of the short forms also. What is the short form of will not? The short form of will not is won't. WON apostrophe T. And short form of shall not is shan't. SHAN apostrophe comma and T. Won't and shan't. Now coming on to interrogative sentences. Already told you many a times, in interrogative sentences, the sentence always begins with the helping verb. Like here, it will begin with will or shall depending on the subject. Then subject, then first form of verb plus object and question mark. Okay, so the examples are, will he play football? Will it rain heavily in August?
Shall we go to market in the evening? क्या वो फुटबॉल खेलेगा? क्या अगस्त में भारी बारिश होगी? क्या हम शाम को मार्केट जाएंगे? ये सब फ्यूचर में अभी होने वाला है. Now the next kind of future tense is future continuous tense. Now let's see about it. Future continuous tense is used for an action that will be in progress at a given moment in the future. Future में वो action progress में होगा. That action will be continuing in the future. When I talk today about a future action, and that action will be in progress or will be in continuity but at a given moment in the future, it will be clearer to you with examples. Let's see the examples. Tomorrow at 1 p.m. I shall be taking my lunch. आज मैं ये बात कर रही हूँ कि कल 1 बजे मैं अपना लंच कर रही होंगी. सीता विल बी सिंगिंग ऑन द स्टेज एट दिस मोमेंट. इस मोमेंट पे सीता स्टेज पे गाना गा रही होगी. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जहां रहा वाले सेंटेंसेस आते हैं, फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. रहा होगा, अभी फ्यूचर में हो रहा होगा वो काम, अभी नहीं हो रहा ना, वो हो रहा था, फ्यूचर में हो रहा होगा. Okay, now coming on to the rules. First is affirmative sentences. Subject plus will be or shall be plus V1 plus ing. Be, इसमें जो continuous में will के साथ be आता है. See the examples. A cool breeze will be blowing at this time tomorrow. कल इस टाइम पे ठंडी हवा चल रही होगी. She will be going to London next week. Next week वो लंदन जा रही होगी. I shall be cooking food for guests in the evening. मैं शाम को गेस्ट्स के लिए खाना पका रही होंगी. तो अभी ये काम हो रहा होगा, या मैं कर रही होंगी, या कर रहा होगा, या कर रहे होंगे. फ्यूचर में दिस एक्शन विल बी इन कंटिन्यूटी. खत्म नहीं होगा, बट जब हम बात कर रहे हैं while the time of speaking, at that time वो एक्शन हो रहा होगा. It will be in progress. Negative sentences. Subject plus will not be, shall not be plus V1 plus ing. A cool breeze will not be blowing at this time tomorrow. She will not be going to London next week. And I shall not be cooking food for guests in the evening. Interrogative sentences. Sentence will begin with will or shall, then subject and then be. सब्जेक्ट के बाद बी आएगा. अदरवाइज यहाँ हमने विल के साथ बी इकट्ठा रखा था, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहले विल और शेल, देन सब्जेक्ट एंड देन बी, एंड देन V1 एंड ing. Will a cool breeze be blowing at this time tomorrow? क्या कल इस टाइम पे ठंडी हवा चल रही होगी? Will she be going to London next week? Shall I be cooking food for guests in the evening? क्या मैं शाम को गेस्ट्स के लिए खाना पका रही होंगी? So this was about future continuous tenses. Now the third type is future perfect tense. Now future perfect tense. Let's see, there are two things in future perfect tense. First is to express an action completed before a given moment in the future. When we talk about a single action, जब एक ही incident है, when we are talking about only an incident, there are no two incidents happening at the same time. We are talking about only one action, and that action has been completed. वो काम खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में. जो हमें टाइम दिया है उससे पहले वो काम खत्म हो चुका होगा. आज जब मैं बात कर रही हूँ उस फ्यूचर टाइम की, बट उस टाइम से पहले मैं जिस काम की बात कर रही हूँ वो काम खत्म हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल, the school will have declared the result by next Saturday. इन सेंटेंसेस में बेटा ऑलमोस्ट बाय आता है, तक, जिसका मतलब होता है तक. नेक्स्ट सैटरडे तक
स्कूल रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट टुडे, दैट when the result will have been declared, I am talking like the school will have declared the result by next Saturday. Next Saturday तक school जो result है वो declare कर चुका होगा. I shall have finished my work by tomorrow evening. कल शाम तक मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी. तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे. The sentences ending with this type of words, चुका होगा, चुकी होगी, etc., we use future perfect tense. Now the second thing, when we are talking of two incidents are happening and it is used to denote that the action will be completed in the future before another action takes place. जब तक कि दूसरा एक्शन होता है उससे पहले ही पहला एक्शन खत्म हो चुका होगा. अब दो एक्शंस की बात कर रही हूं मैं, उसमें एक एक्शन बाद में होगा, दूसरा एक्शन खत्म हो चुका होगा. और the verb expressing the previous future action is put in future perfect tense. तो अगर मैं दो इंसिडेंट्स की बात कर रही हूं और जो एक्शन पहले खत्म हो चुका होगा, दैट एक्शन विल बी पुट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और जो दूसरा काम अभी शुरू होना है उसके लिए आई विल बी यूजिंग present indefinite tense. You will take care of the tenses if you are talking about two incidents and one of them is future perfect, then the another one will be in present indefinite. Okay, one will be in future perfect and the another one will be in present indefinite. For example, I shall have finished my novel before he comes. Now see, there are two actions taking place in this sentence. First is regarding novel, that I shall have finished my novel, and the second action is before he comes. उसके आने से पहले. उसके आने से पहले, before means पहले. I shall have finished my novel. मैं अपना novel finish कर चुकी होंगी. तो पहले मेरा कौन सा काम फिनिश हुआ? नॉवल पढ़ने का. सो आई विल पुट द प्रीवियस फ्यूचर एक्शन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. और दूसरा काम बाद में क्या हुआ वो बाद में आया, उससे पहले नॉवल फिनिश हो गया था. तो द सेकेंड टेंस आई हैव पुट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, second example, he will have reached the school before the bell goes. Before the bell goes or before the bell rings, one and the same thing. So bell बाद में हुई है, मैं पहले ही स्कूल पहुंच चुका होऊंगा. Means bell बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका होऊंगा. वो स्कूल पहुंच चुका होगा, मैं नहीं, सॉरी, वो है ही. वो स्कूल पहुंच चुका होगा. तो ये एक्शन पहले फिनिश हो चुका होगा. सो आई हैव पुट दिस एक्शन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द टेंस accompanying with it will be in present indefinite tense. So you will just take care that in future perfect, future continuous, future perfect continuous, if one tense is in future, then the another tense will be in present indefinite tense. Okay, now see the rules. Affirmative sentences, subject plus will have or shall have plus V3. Okay, so the example is the train will have come before you reach the station. Now two actions are taking place, एक तो स्टेशन पहुंचने का, दूसरा ट्रेन के आने का. So पहले कौन सा काम हो चुका होगा? ट्रेन के आने का, कि ट्रेन पहले ही आ चुकी होगी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले. So this will be in future perfect, will have come, and this will be in present indefinite, you reach. तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी. I shall have read the whole book before you come back. तुम्हारे वापस आने से पहले मैं पूरी किताब पढ़ चुका होऊंगा. By the next year, he will have shifted to another city. Now in the third example, I am talking of only one action. तो next year तक वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुका होगा. ठीक है. Now negative sentences, subject plus will not plus shall not or shall not plus have plus V3.
Will not have, shall not have. Simply you are going to put not with will or shall. The train will not have come before you reach the station. I shall not have read the whole book before you come back. By next year, he will not have shifted to another city. Interrogative sentences. Sentence will begin with helping verb, that is will or shall, depending on the subject, then subject, and then have, then third form, and then question mark. But in this type of sentences it is not necessary that we are having an object with us. ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी हमारा ये सेंटेंस बनते हैं. ठीक है. लाइक इन दिस विल द ट्रेन हैव कम बिफोर यू रीच द स्टेशन. ट्रेन सब्जेक्ट की बात हो रही है बट इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है. सो क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी होगी? Shall I have read the whole book before you come back? क्या तुम्हारे वापस आने से पहले मैं पूरी किताब पढ़ चुकी होंगी? Will he have shifted to another city by next year? क्या नेक्स्ट ईयर तक वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुका होगा? बेटा इफ वी आर टॉकिंग ऑफ टू टेंसेस देन देयर इज ब्लेंड ऑफ टू टेंसेस. फर्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट एंड देन इज present indefinite. But if I'm talking about only one incident, then उसकी पहचान है कि मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें बाय लगा होता है. नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट डे तक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो इवनिंग, बाय इवनिंग, बाय द नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके. ओके. नाउ द लास्ट काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर perfect continuous. Why this tense has been kept in the watch? Because time reference is very much important with this type of sentences. Time reference is for or since. जो action कितने time के लिए चल रहा होगा वो चीज बताए. See, future perfect continuous tense is used to describe an ongoing action that will complete in future. जब मैं बात कर रही हूँ वो काम चल रहा होगा but will complete in future. ठीक है. Ongoing action means the action that is in progress. The action is assumed to be continued for a time. ये कुछ specific या unspecific time के लिए assume किया जाता है कि वो action चल रहा है. And a time reference is used to show for how long the action continues. Now time reference is for or since. जब मैं for या since की बात करती हूं मीन्स जो ये बताए कि वो एक्शन कब से चल रहा होगा. 3 घंटे से, 10 बजे से, 5 दिनों से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, मीन्स that denotes that the time reference has been given with the future perfect continuous tense and it is used to show for how long the action continues. It will be clearer to you with the help of examples. He will have been studying in the library for 3 hours. Now see, this is the time reference कि वो 3 घंटों से लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा. Now the action is ongoing. खत्म नहीं हुआ. वो 3 घंटों से लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा और उसके साथ टाइम रेफरेंस दिया है. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ongoing action है, दूसरा टाइम रेफरेंस. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल इज द किड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM. बच्चा 10 बजे से लेके सो रहा होगा. अभी तक सो रहा होगा रात के 10 बजे से लेके. They will have been discussing about the issue for 5 days. वो इस इशू को 5 दिन से डिस्कस कर रहे होंगे. Okay, so for is used for period of time. Since is used for point of time. Now rules for affirmative sentences. Subject plus will have been or shall have been. See, the rule to learn the rules is very much important. Unless and until you learn the rules, you cannot frame the sentences. And along with its identification, its usage is also very important. ये यूज कहाँ होने हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रूल्स क्या हैं. सो यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. So rule is subject plus will have been, shall have been plus V1 plus ing plus object. Object is not necessary. It may or may not be there.
since or for plus time duration. He will have been reading the book for 2 hours. वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा. देखो टाइम रेफरेंस भी दिया है और एक्शन भी ऑन गोइंग है. इट इज नॉट फिनिश्ड. वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा. आई शैल हैव बीन वॉचिंग द कॉन्सर्ट फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से कॉन्सर्ट देख रहा होऊंगा. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस dawn. dawn मीन्स अर्ली मॉर्निंग. सो अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही होगी. Negative sentences, subject plus will not have been or shall not have been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time duration. Same hai, only not is put along with will or shall. He will not have been reading the book for 2 hours. I shall not have been watching the concert for an hour. It will not have been raining since dawn. Now interrogative sentences. Sentence will begin with will or shall, then subject and then have been. Subject के बाद आपका have been आएगा and rest of the sentence is same. V1, ing, object, since or for, time duration and question mark as we are asking the question. So question mark is important to put. Will he have been reading the book for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? Shall I have been watching the concert for an hour? क्या मैं 1 घंटे से कॉन्सर्ट देख रहा होऊंगा? Will it have been raining since dawn? क्या dawn से early morning से बारिश हो रही होगी? So this was all about all the kinds of future tenses. So I hope you are done with it and you are clear with it. Still you feel any doubt? You can ask me.